सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की भक्तिनगर थाना की सादे पोशाक की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक वाहन को भी जब्त किया गया है। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. आरोपियों के नाम रोशन शंकर और राहुल सिंह हैं। रोशन शंकर सिक्किम के रंबी बाजार इलाके का निवासी है। वहीं राहुल सिंह कमला नगर सालूगारा का रहने वाला बताया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार रात को गुप्त सूचना के आधार पर 42 नंबर वार्ड के चैनपाड़ा इलाके में पुलिस ने अभियान चलाकर दोनों युवकों को रोककर उनकी तलाशी ली। इस दौरान उनके पास से एक बैग बरामद हुआ जिसमें 60 पीस प्रतिबंधित कफ सिरप था, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज दोनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है।